Hello everyone. Today I am going to discuss with you the concept of consumer surplus. It is important concept. Important इसलिए है कि बड़ी सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट की इसके बेसिस पे बनती है और जो बायर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो भी अपना जो बाइंग डिसीजन है मार्केट में वो इससे डिटरमिन कर सकते हैं कि उनको शॉपिंग करने में, मार्केट में जाके कोई चीज खरीदने में कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा. So let us understand the concept. Well, the concept of consumer surplus was first formulated by Dupitt in 1844, but it was Alfred Marshall, a neoclassical economist, who refined and popularized the concept in his book Principles of Economics in 1890. According to him, every increase in consumer surplus is an indicator of the increase in social welfare. इसलिए जैसे मैंने आपको कहा कंज्यूमर सरप्लस जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू डिटरमिन टू अंडरस्टैंड द सोशल वेलफेयर कंपोनेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड आल्सो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. वेल, कंज्यूमर सरप्लस है क्या? आप मार्केट में जाते हैं एंड यू बाय समथिंग. आपके माइंड में एक प्राइस होता है जो आपने उस चीज के लिए पे करना है, लेकिन एक्चुअल में आपको कुछ और ही पे करना पड़ता है. लेट अस से यू वांट समथिंग एंड यू लेट अस से आप एक शर्ट बाय करना चाहते हैं और आप शर्ट के लिए ₹1500 या ₹2000 पे करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको वो शर्ट मिल जाती है 500 की. अगर आप पे करना चाहते हैं 1500, आपने घर से जब आप चले थे आपने ये मान के चले थे कि मैंने 1500 एक शर्ट का पे करना है, लेकिन आपको वही चीज 500 में मिल जाती है. तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? 1500 माइनस 500. 1500 माइनस 500 दैट इज ₹1000. तो इसका मतलब क्या हुआ? कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस दैट वन इज विलिंग टू पे and the price one actually pays for a particular product, right? इसको हम ये भी एक फॉर्मूला है CS कंज्यूमर सरप्लस इज सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी. हम इकोनॉमिक्स में मान के चलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स. मींस किसी भी चीज की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो उसके प्राइस के जब बराबर होती है तो हम मानते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है. तो ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी मींस जो कंज्यूमर पे करना चाह रहा है, राइट, जो उससे यूटिलिटी उसे मिलेगी, माइनस प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी परचेज. तो ये क्या है? ये दिस इज एक्चुअल प्राइस. दिस इज एक्चुअल प्राइस. और ये सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? इट इज इक्वल टू प्राइस कंज्यूमर विलिंग टू पे. कंज्यूमर विलिंग टू पे, राइट? सो कंज्यूमर सरप्लस सिंपल लैंग्वेज में जैसे मैंने आपको बताया, इट इज difference between what consumer wants to pay and what consumer actually pays. There are two three versions. पहले हम मार्शलियन वर्जन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपसे हिक्सियन वर्जन भी डिस्कस करूंगा. एल्फ्रेड मार्शल का जो कॉन्सेप्ट है, इट वाज बेस्ड ऑन यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमांड. इसको हम समझ लेते हैं. तो पहला जो कॉन्सेप्ट है डिस्क्रीट गुड्स. डिस्क्रीट गुड्स मींस वो गुड्स जो इनडिविजिबल है. फॉर एग्जांपल कार. कार इज एन इनडिविजिबल गुड. इनडिविजिबल गुड. इसका मतलब क्या है? आप एक कार को जब मार्केट में लेने जाते हैं तो कार आपको पूरा ही बाय करना पड़ेगा. कार आपको टुकड़ों में नहीं मिलेगा. यू कांट बाय इट इन पीसेस, राइट? लेकिन आप शुगर जब बाय करने जाते हैं मार्केट में तो शुगर आप 1 kg भी ले सकते हैं, 1.5 kg भी ले सकते हैं, 2 kg भी ले सकते हैं. आपने सपोज फ्रूट्स खरीदने तो आप ऑरेंजेस 1 kg भी ले सकते हैं, 1 kg 750 ग्राम्स भी ले सकते हैं, 1 kg 500 ग्राम्स भी ले सकते हैं. सो ऑरेंजेस हम कह सकते हैं दे आर डिविजिबल गुड्स, बट कार इट इज एन इनडिविजिबल गुड, राइट?
लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पे कंज्यूमर फर्स्ट यूनिट के लिए ₹20, दिस इज द फर्स्ट यूनिट, इसके लिए वो ₹20 पे करना चाहता है, लेकिन एक्चुअल प्राइस क्या है कमोडिटी का? प्राइस है, लेट अस से दिस इज एक्स कमोडिटी और प्राइस है ₹12, ₹12 कमोडिटी का प्राइस है एक्चुअल में। लेकिन वो पे कितना चाहता था? 20। तो कंज्यूमर सरप्लस फर्स्ट यूनिट में जब उसने बाय किया, 20 - 12 कितना हुआ? ₹8। दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस। सेकंड यूनिट उसने बाय किया, तो सेकंड यूनिट के लिए वो पे करना चाह रहा था ₹18, लेकिन पे उससे कितना करना पड़ा? मैंने कहा कि प्राइस ऑफ एक्स इज ₹12, सो कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ? 18 - 12 ₹6। थर्ड यूनिट में ही वांट्स टू पे ₹16 थर्ड यूनिट को बाय करने, बट ही एक्चुअली पेज ₹12 एंड कंज्यूमर सरप्लस इज ₹4। 16 - 12 4। और जो फोर्थ यूनिट है वहां पे बाय करने के लिए, इस फोर्थ यूनिट को बाय करने के लिए ही वाज रेडी टू पे ₹14, बट ही एक्चुअली पेज ₹12, राइट? सो कंज्यूमर सरप्लस while buying fourth unit is 14 - 12, that is ₹2। फिफ्थ यूनिट में ही wants to pay ₹12 और एक्चुअली उसने पे भी उसे 12 भी करना पड़ा, सो 12 - 12 0, सो फिफ्थ यूनिट में उसे कंज्यूमर सरप्लस 0 मिल रहा है, राइट? सो फॉर फर्स्ट 4 units for first 4 units he is getting consumer surplus of ₹8 plus 6 plus 4 plus 2, 8 plus 6 plus 4 plus 2, it is equal to 20। you see total consumer surplus from 5 units। पांचवा यूनिट भी हमने ले लिया बिकॉज पांचवें यूनिट में उसको कंज्यूमर सरप्लस 0 मिल रहा है, उसको भी अगर आप ऐड कर लो, प्लस 0 कर लो, यहाँ पे 0 कर लो, तो आपका ₹20 बनेगा। सो दिस इज हाउ कंज्यूमर सरप्लस इज determined on the basis of discrete goods, right? uh, this is how we can discuss consumer surplus in case of perfectly divisible goods. I gave you example of perfectly divisible goods. It is sugar. Sugar is a classic example of perfectly divisible good. Now under this, the area below the demand curve, it will be consumer surplus, right? So in this diagram you can see DPS is consumer surplus, right? Now you can see here ODSM, it is what consumer wants to pay, right? OPSM, what consumer actually pays, right? So this is consumer surplus, DPS, right? So this is Marshallian version under perfectly divisible good. Now let us discuss the concept of consumer surplus with Hicksian version. J.R. Hicks was the man who invented indifference curve, right? And according to indifference curve analysis, consumer surplus is dif- is the difference between two indifference curves, the area that lies between the two indifference curves. It is consumer surplus. You see in this diagram, UBAS is consumer surplus. ये consumer surplus कैसे आया? Let us understand this concept. जनरली जब हम प्राइसेस, अब फॉर एग्जांपल पिछले डायग्राम में अगर आप देखो या इसी डायग्राम में आप देखो, लुक एट दिस डायग्राम, हमने वाई एक्सिस पे लिया मनी इनकम, राइट? और एक्स एक्सिस पे हमने लिया है कमोडिटी एक्स, राइट? नाउ प्राइसेस हम पे करते हैं, जबकि इनकम वाई एक्सिस पे जब हमने इनकम लिया, इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर की जो बजट लाइन है, इट इज टीएम। नो, टीएम इज बजट लाइन, टीएम इज बजट लाइन, राइट? अब टीएम बजट लाइन है और ये मनी इनकम, वाई एक्सिस पे हमने मनी इनकम लिया है, राइट? सी
एक्स एक्सिस पे अगर आपको बजट लाइन का कॉन्सेप्ट याद हो तो हम क्या करते थे, एक्स एक्सिस पे कमोडिटी लेते थे, कमोडिटी एक्स, वाई एक्सिस पे लेते थे कमोडिटी वाई। तो यहाँ पे इनकम को भी हमने कमोडिटी माना और इनकम को हमने वाई एक्सिस पे लिया, राइट। अब लेट अस से कंज्यूमर जो है वो टी एस, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ चले, ऊपर से हम नीचे की तरफ चल रहे हैं, कंज्यूमर वाज रेडी टू सैक्रिफाइस टी एस amount of income to buy OR amount of good, OR amount of good, right? So अगर ऐसा है तो कंज्यूमर की जो कंज्यूमर अपने आप को IC1 इंडिफरेंस कर्व 1 IC1 पे पाता है एंड A is the point of equilibrium for consumer. So it means consumer was ready to pay, ready to give up TS, TS amount of income to buy TS income to buy OR commodity, OR of X, राइट। लेकिन बाद में कंज्यूमर देखता है कि उसकी बजट लाइन जो है TM है एंड एक्चुअली he is at equilibrium at point B, at point B. It means he has to sacrifice only TU rather than TS, right? So जब उसे कम sacrifice करना पड़ रहा है income, it means his consumer surplus rises. So consumer surplus then would be, as I told you, it is the area lying between the two indifference curves. So here SUBA, SUBA, this area will be consumer surplus, right? So area between two indifference curves would be consumer surplus. I hope this concept is clear. अब हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे with two assumptions: when marginal utility of money is constant and when marginal utility of money is falling. I told you earlier that Alfred Marshall assumed that marginal utility of money remains constant, right? So we can say that this concept of indifference curve, under this, marginal utility of money is constant. So this is basically Marshallian concept. आप ये भी समझ सकते हो, Marshallian concept explained with the help of indifference curve, right? Now look at this diagram. इस डायग्राम से क्या है कि अगर IC0 इंडिफरेंस कर्व क्या बता रही है, दैट कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे A dash M of quantity for the quantity OQ, since point B shows IC of the consumer between having OQ of X and OA dash of income to spend on other goods. It means अगर कंज्यूमर MA dash इनकम सैक्रिफाइस करता है तो वो ओ ए डैश इनकम जो उसके पास बच गई उससे वो कुछ और गुड्स बाय कर सकता है एंड कंज्यूमर फाइंड्स हिमसेल्फ ऑन पॉइंट बी, राइट, पॉइंट बी, राइट। बट अगर हम एक बजट लाइन ड्रॉ करें एम एम डैश एंड कंज्यूमर एक्चुअली फाइंड्स हिमसेल्फ ऑन दिस बजट लाइन एट पॉइंट ई, now this is consumer equilibrium point because here budget line is tangent to indifference curve. The slope of budget line is px upon py and slope of indifference curve is marginal rate of substitution of x for y, right? Here y is income, right? So point E पे consumer equilibrium पे अपने आप को पाता है. So it means A dash B E dash, it is consumer surplus, or EB is consumer surplus. इसको हम अगर vertically लें तो EB is consumer surplus, अगर हम सारा ले लें तो AEBA dash is consumer surplus. Now marginal utility of money is constant, वो हम कैसे लेंगे? Now, read the first line. Under the Marshallian assumption, marginal utility of money is constant. IC0 will be vertically parallel to IC1. The difference curve will have the same slope at any given quantity of X.
ये जो स्लोप है डिफरेंस कर्व की, you can see this slope, you can see this slope, right? This slope is same as the budget line here, right? This is, and this is the, and this is the slope of indifference curve, because the slope of budget line is equal to slope of indifference curve. So this is the slope of indifference curve. So two indifference curves, they have same slope, signifying the fact that marginal utility of money is constant, right? So ये जो पीछे हमने कॉन्सेप्ट किया पिछली स्लाइड में, वो भी ऐसा ही था. So this is Marshallian version with the help of indifference curve. Now marginal utility of money is declining, ये Hicksian version है. अब यहाँ पे क्या है, look at this diagram. यहाँ पे थ्योरी मैंने दे रखी है लेफ्ट साइड, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, थ्योरी आप अपने आप पढ़ लीजिएगा. Now look at this diagram. E is the point of equilibrium, because at E, Px upon Py is equal to MRSXY, right? Anyway, अब यहाँ पे क्या है, IC2 is parallel to IC1. You can see IC2 is parallel to IC1. If IC2 is no, IC2 is parallel to IC1. What does it mean? It means marginal utility of money is constant, right? So in this case, consumer surplus will be A dash, या इसको हम पूरा ले लें A dash, then A double dash E, right? Okay, this is consumer surplus. लेकिन हम एक और इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते हैं M से. It is IC0. Now you can see IC0 is flatter than IC2 or IC1. It is flatter. It means ये धीरे धीरे फ्लैटर होती जा रही है और आगे जाके ये ऐसे हो जाएगी, आगे जाके ये और ऐसे हो जाएगी, राइट? ये रिफ्लैटर होती जा रही है. व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स जैसे जैसे कंज्यूमर इनकम छोड़ता जा रहा है, उसके लिए इनकम की यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती जा रही है, उसकी यूटिलिटी कम होती जा रही है. सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज नॉट कांस्टेंट, इट इज डिक्लाइनिंग, राइट? Flatter, when indifference curve becomes flatter, it means its marginal utility for money income is falling, right? Now you can see this is Hicksian concept, and here the consumer surplus is, no, Hicks consumer surplus is AB. Marshall's consumer surplus, जैसे मैंने आपको पहले कहा, it is AA dash, right? It means Marshall consumer surplus is greater than Hicksian consumer surplus. Now look at this, right? So if marginal utility of money is constant, consumer surplus is AA dash. और मैंने आपको बताया जो दूसरा जो हिक्सन कंज्यूमर सरप्लस था, वहां पे कंज्यूमर सरप्लस बी ए और बी डैश, राइट? सो इट इज very much clear that Marshallian consumer surplus is greater than Hicksian consumer surplus. या इसको आप ऐसे भी कहो कि consumer surplus is greater when marginal utility of money is constant, consumer surplus is less when marginal utility of money falls, right? So I hope this concept is clear. Consumer surplus has many uh, it's a very useful tool for the government, especially when the government formulates tax policy. Government formulates tax policy on the basis of consumer surplus, keeping in mind that what type of impact it will have on consumers, especially middle class or lower middle class. Government formulates subsidy policy on the basis of consumer surplus, keeping in mind that what impact it will have to the beneficiary, right?
Similarly, cost and benefit analysis can be done with the help of consumer surplus. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को एक फ्लाईओवर बनाना है तो गवर्नमेंट देखती है कि उस फ्लाईओवर बनाने से जो मूवमेंट है व्हीकल्स की कितनी फास्ट हो जाएगी, वहाँ पे फ्यूल एक्सपेंडिचर लोगों का कितना कम होगा, डिस्टेंस कितना कम होगा, उनका टाइम कितना सेव होगा। तो ये जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, ये भी ऐसे डिसीजंस भी कंज्यूमर सरप्लस से लिए जाते हैं। एंड वन थिंग मोर, कंज्यूमर सरप्लस इज आल्सो यूजफुल स्पेशली व्हेन गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्सेस। तो गवर्नमेंट ये देखती है कि टैरिफ, स्पेशली जब फॉरेन ट्रेड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी हम लगाते हैं, कि इंपोर्ट ड्यूटी लगाने से जो कंज्यूमर सरप्लस है वो कितना चला गया, कंज्यूमर को कितना नुकसान हुआ। तो गवर्नमेंट उसके बेसिस पे ही डिसीजन लेती है कि कंज्यूमर का लॉस ज्यादा ना हो, राइट। So this is all with this concept. So thank you very much. I hope this concept is understood. If you have any query, any question, you can post your questions or queries in the comment section. Thank you very much.